Okay, very quick analysis because Pragyan won this game. So this is just a quick game to appreciate how well he played. Not a game where I'm gonna criticize and let him know what his mistakes were and how bad he played and how should he improve. Okay, nice game, quick game. Let's go through it. E4, E5, Bishop C4, developing the piece. Perfect. Knight F3, just controlling the center, developing the pieces. So far, so good. His opponent, yes, Ananya. आप जब बोल रहे हो आपकी आवाज तेज होती है स्पीड तेज हो रही है या वॉल्यूम तेज हो रही है? तो स्पीड धीरे कर लेते हैं. ओके ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट गाइज, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. ओके ओके, yeah, Shusha, I'll call her sometime. Okay. Okay, let me tell you. Okay, I'll be very slow. Bishop C4, Knight F3, center controlling, very good thing. बहुत बढ़िया खेल रहे हो प्रज्ञान. Here Pragyan's opponent played H6, not a good move. Pragyan played very well and captured the free pawn, winning and giving the threat of playing this, and also by playing d4 gaining the center. His opponent played d6 and blundered, and Pragyan very well played. He captured this, gave a fork, बहुत बढ़िया Pragyan, and then Pragyan won the rook, and then Pragyan blundered here. His opponent is giving the same threat and Pragyan should defend it. Now Pragyan, आप मुझे बताओगे कि कैसे डिफेंड कर सकते हैं जो आपने ब्लंडर कर दिया? क्या? हाँ? Even after he blundered, he can save his. क्वीन F3 पे वो क्या करेगा? So just do castling. Knight F2. So just do castling. फिर Ananya, don't interrupt. Let him say. F1. Rook F1. Is there any better alternative for Rook F1, Pragyan? सर अगर हम पहले ही रुक F2 चल गए तो मतलब? सर मतलब हम कैंसिल कर सकते हैं स्मूथ में. तो इधर क्या करना चाहिए? सर कैंसिल. एग्जैक्टली प्रज्ञान, देखो बहुत सिंपल है यार. खुद से सवाल पूछो कि कोई भी मूव चली, ये मत बोलो मैं कुछ भी चल दूंगा, उसका नाइट आया, सर ने बोला था अटैक करके भगाओ. नहीं, क्यों? उसने क्या करा है? वो फोर्क लगाना चाह रहा है जो सेम चीज़ तुमने करी है. अब उसको प्रोटेक्ट करना है. कैसे कर सकते हो? दो वे है, A B C D. या तो A से अवे इसको दूर भगा दो, बट उससे कुछ होगा नहीं. B से ब्लॉक कर दो. जो बिशप तुम्हें अटैक कर रहा है D4 चल के वो बिशप को ही ब्लॉक कर दो ताकि इसका सपोर्ट ही खत्म हो जाए, विच इज़ अ ग्रेट मूव. डेवलपमेंट भी हो रहा है, बेस्ट मूव है. या फिर C कैप्चर, वो भी ब्लंडर है बिकॉज क्वीन मर जाएगी. D डिफेंड, कैसल कर लो. सिंपल, प्यारी तो मूव है. रुक F1 में भी कोई ख़राब नहीं है, पर अब तुम्हारा किंग फालतू का सेंटर में रहेगा, फिर वो ये मार के तुम्हें तंग करेगा. फिर ऐसी कुछ टैक्टिक्स आ सकती है, फिर तुम ब्लंडर कर सकते हो ऐसा कुछ करके. वैसे अभी भी पूरा विनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कैसल करो ना, सेफ रहो. कौन सी मूव हुई है अभी गेम की? 8वीं मूव है. कैसलिंग कर लो, खत्म. अब इसके बाद अगर वो ऐसे मारेगा तो ये ट्रेड किसके लिए बेटर है, तुम्हारे लिए या उसके लिए? सर मेरे लिए. तो बस ये तो पता है ना क्यों बेटर है तुम्हारे लिए. वैसे बताना मुझे जरा. सर क्योंकि हमारे 5 वो पॉइंट का रुक जा रहा है, उसका 6. नहीं नहीं, तुम्हारे भी 6 गया, तुम्हारा भी 6 गया, तुम्हारा भी तो एक पॉइंट गया. यस सर. पर फिर भी तुम्हारे लिए अच्छी मूव क्यों है? सर ये मुझे नहीं पता. क्यों है, मुझे कौन बताएगा? व्हाई इज इट स्टिल गुड फॉर प्रज्ञान? दो इट्स अ जीरो ट्रेड, बट व्हाई इज इट बेटर फॉर प्रज्ञान? 2 reasons. Who can tell me the 2 reasons? Because he has now 2 pieces and a pawn is not worth that much. क्या बोला श्रीनिधि ने प्रज्ञान? सर मेरे पास 2 pieces हैं. Exactly. You have 2 pieces. When he does this, it is a zero trade. You lose 6.5 plus 1, 6. He also loses 6, 3 plus 3. But pawn is not a piece. And guys, he lost a piece. Sorry, you lost 1 piece and he lost 2 pieces. These 2 pieces are very dominating and he lost 2 pieces just for a rook. This is a very famous imbalance, like 1 piece versus 2 rooks. But please keep in mind that it's clearly better as you lost 1 rook and he lost
2 pieces and you lost only 1. So that is slightly better for you. Materially equal hai, but still slightly better for you. Now, my dear Viraj or Ananya, let's see. Can you tell me the second reason why this trade is good for Pragya? Chalo, Why Ananya. do we have to tell for Pragyan? He should tell for himself. Okay, I'm giving you the chance and you don't want to take the chance. So let us go back to Pragyan. Pragyan, can you tell me one? No. Pragyan, can you tell me one more reason क्यों तुम्हारे लिए ये ट्रेड बहुत अच्छी है? सर क्योंकि मैंने पीस ब्लेंडर किया Where did I got it? मैंने पीस दिया और दूसरे ने 2 पीस वो तो है, लेकिन एक और रीजन. ये तो एक पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट क्या है? जैसे अपन बोलते हैं ना कि एक पॉइंट हो गया कि आज तो पनीर बनाया, तो क्यों अच्छा बनाया? क्योंकि पनीर गर्म है. दूसरी बात, क्योंकि पनीर इज टेस्टी. एंड थर्ड थिंग, यू कैन नॉट से पनीर इज टेस्टी. थर्ड थिंग में भी पनीर इज क्रीमी, पनीर इज क्रंची, और द नान इज गुड, और यू लाइक डोसा. ओके, Or आई the chawal. No. ओके गाइज, आई रियली नीड टू गो टू अवर रेस्टोरेंट नाउ. I want to very hungry. Why are you telling about food days? Definitely. Yes, tell me. Sir, how can you Tell me. What is the second reason? Tell me, Viraj, Ananya, anyone? Can I have a guess? Yes, please. I don't know. But Ananya, tell me one more reason. Come on. What? Because he's what reason? What kind of reason? क्यों ये ट्रेड अच्छी है प्रज्ञान के लिए? विराज तुम बताओगे. विराज समझदार है, विराज बता देगा. विराज बताओ यार. सर आ गया वापस. बताओ क्यों अच्छी है ये ट्रेड प्रज्ञान के लिए? सर क्योंकि कौन की ज्यादा यूजुअली वैल्यू नहीं होती, उसकी एंड गेम में ज्यादा वैल्यू होती है. वो हो गया पॉन पीस वाला रीजन. एक और रीजन पूछ रहा हूँ मैं. सर मुझे भूख लगी है. तो मैं क्या करूँ? मैं टीचर हूँ, तुम्हारा कुक हूँ. मैं क्या करूँ? भूख लगी. पोजीशन वाइज ज्यादा बेटर नहीं है अभी. और Guys, हम अपना नाइट वापस ले सकते a हैं. few more very subtle reasons and simple reasons is that his pieces which were the most active are being traded. Guys, think logically. I'm giving you the chess logics. प्रज्ञान, ये गाय वाय हटाओ और फोकस करो. फोकस. I know you guys are very That's it. Now that Focus. answer. I was gonna say that. Yes, My focus. opponent's well open pieces are missing and my opponent's Exactly. are not. Your opponent's pieces which are very well developed and attacking you, they are being traded off. B, that your opponent's only pieces which are active are trading off. C, these pieces are doing nothing but still they are making your king feel uncomfortable, and if he goes queen h4, then there can be some deadly tactics and you have to lose material. Obviously this is still winning for you, but I doubt if you want to play any such position where you can be checkmated very very soon, and you need to literally find the best move. In fact guys, I would personally say I am a bit lost here. I really don't know what to do after queen h4. Let's do it without the computer. Okay, h3 is a must move, or maybe if we give a check, he can't go here due to the fork, so of course he can't go here as well. If he goes here, then it's a good news for us because We are gonna play. no, we can't play this. Yeah. But I will feel he goes here. Then h3 he goes here. Then we might need to give away the material like this. I think this is the best move. Let's check with the computer. Once. Well, I'm 100% sure, but there's no harm in checking. Okay, the computer says that indeed h3 is the only move. Bishop b5 is one more move. Okay, that's stupid because you have lost a lot of pieces, and computer is like, bro, you can give away everything. In fact, computer is saying you can also give away your queen because your position is so active, you have such active pieces. But I doubt if anybody wants to play without a queen. Knight, bishop f2, and then the computer says yes. See guys, king h1 is not a good move because he can play queen g3 and we are cooked. Too many checkmates, and the only move is to sacrifice our queen and play like this where black is better.
And if we have to capture with the rook, and as I said, you have to give away a rook, he plays something like this, and of course he can't play this. So guys, you are involving unnecessary complications, and you have to find the only best move. So what I'm trying to say, that even after castling, your king is still under danger. So let's say he doesn't find this, instead he just captures this. So guys, your king is now completely safe. Though it is uncastled, of course it's uncastled, but it's completely safe because there's no piece to attack. You're just developing and you're just doing literally good. So now you can just sit back, relax and chill. There's no piece to attack. And an even important thing, which is principally very correct, that more and more pieces are getting traded off, guys. And Pragyan is ahead in material. Pragyan के पास 2 pawn और 1 rook ज़्यादा है. तो जितने zero trades होंगे, Pragyan is moving closer and safer towards victory. तो इसी गेम को फटाफट जाते प्रज्ञान ने ब्लंडर कर दिया, पर प्रज्ञान ने चेक दी, फिर प्रज्ञान रुक F1 लाया, बहुत अच्छी मूव है, पीस ला रहे. अभी प्रज्ञान ने क्वीन को अटैक किया, ठीक है, अभी और आगे अटैक किया, ठीक है, और अपन प्रज्ञान के अपोनेंट ने क्वीन ब्लंडर कर दी. प्रज्ञान बहुत सेफली ये ले आया. प्रज्ञान चीप ट्रिक ट्राई कर रहा है कुछ, बट प्रज्ञान ये मार दो, डरना नहीं, बिशप से मारेगा तो रुक दे दो. मेरी बात मानो, जब भी 2 पीस मिले रुक दे दो, इसको रट लो दिमाग में. तुम डरते हो कि रुक मर जाएगा सर, रुक बड़ा होता है. नो, रुक इज 5 and 3 + 3 6. अबैकस चैंपियन हो यार तुम, मैच तो करो. एंड देन प्रज्ञान blundered his queen. No, Pragyan, your queen is under danger. Don't blunder your queen. Just make sure that go to the opposite square, dark square, light square, कुछ भी करो, queen तो blunder मत करो. You blundered your queen, Pragyan, very bad. चलो उसके बाद भी winning है, but don't blunder the queen, and it took you very long, but okay, don't blunder the queen. Nice game.